He joined the University of Lucknow as lecturer in 1990 and has been serving as professor since 2007. Professor Pandey was former nominee of Senate and Board for Postgraduate Studies, IIT Delhi, and former member of Executive Council, University of Lucknow. He was also selected for the flagship program, Leader for Academicians program, LEAP program, जिसको बोलते हैं, by the Ministry of Human Resource Development, New Delhi. He has received training in academic leadership at Cambridge University, Churchill College, and the Indian Institute of Technology, Kharagpur. He also held a number of administrative roles such as member of University of Lucknow's Executive Council, coordinator of the Lucknow University Students Union, director of the Cultural Activity Board, and spokesperson of the university. Professor Pandey is a NAC assessor also and has contributed immensely to the academic and research ecosystem with more than 150 research papers and over 60 invited lectures and supervision of 13 PhD scholars. He has contributed in the field of fiber optic sensors and solid state sensors and is widely recognized for these works. And I feel proud to invite Professor T.P. Pandey sir. Recently I was talking to him few days back and I noticed that his 3 papers were published in duration of 2 or 3 days, and most of the papers were in journals of impact factor more than 10. So that is the kind of work and dedication for his research and academia. I very respectfully invite Professor T.P. Pandey sir to kindly deliver his talk. Thank you very much. And in line with the pre-lunch session, request of Professor Santosh Kumar, I would like to go more about my invited talk in Hindi, sir. Because that was the request you made to them, and it was my lecture was, as you informed, scheduled before the lunch, and other speakers requested me to get them finished before the lunch. I said no problem, I am here for 2 days at your disposal or disposable, whatever you can say. So they disposed me off to the post-lunch session. I didn't mind, because one thing I knew, that post-lunch, whatever you speak, very few people will be listening to. Because mind it, the rice is going to have a heavy toll on everybody's mind. Some people may be feeling slightly sleepy. Absolutely no problem. So thank you very much, Professor Santosh, for inviting me. It is always a pleasure for me to come to Bihar, my own state, and deliberate something on academics. Thank you very much. So actually, my initial works were on fiber optic sensors. Then I migrated to solid state sensors, and it is around 2.5 to 3 years back that I switched over to. Of course, it was also the sensor field, but I used the same samples that metal oxide samples that I used for sensing. Now, what we are doing is we are irradiating them with the ion beam. You can say high energy ion beam or low energy ion beam and the gamma irradiation. And we are trying to, welcome sir. Thank you. Earlier भी एक advertisement आया करता था. There was little bit of sale का Steel Authority of India का एक advertisement आता था. There is little bit of steel in everyone's life, and I say there is lot of economics in everybody's life. Sir,
There is a lot of economies in everybody's life that we cannot rule out. So, around 2 to 3 years back, I somewhat shifted my attention. Of course, I continued my work in the sensor technology, but at the same time, the same metal oxides that we synthesized or samples we fabricated in our laboratory, we are irradiating them with heavy ion beam, high energy heavy ion beam, and low ion beam, and also gamma irradiation. And then we are characterizing them through various characterization techniques, and thereafter we are using them for the sensor. And we have found a lot of advantages. I mean, there is a lot of improvement in the sensing performance of these samples after they are irradiated with the ion beam. So this new work that I am going to present to you, that we are doing, not the old work that I have been doing. So this is something new work that I am doing. So I am going to talk about manipulating metal oxide properties through ion beam irradiation. Actually, the abstract that I have sent had also a clause attached to it and its application for the hydrogen gas sensing. But the second part is applicable only if the chairman of the session will permit me more time. Otherwise, I will finish with this part. So depending on how much time I have, so that I will be doing. So with metal oxides, we have a lot of opportunities. You can see metal oxides are getting their applications in many fields. And why? Because of their versatile properties. Many properties they have got, like you can say electromagnetic. They are used in electromagnetic devices, and then gas sensing, photocatalysis. Metal oxides' structural integrity and electrical properties play key roles. And I think large number of researchers are still doing work on the metal oxides, and metal oxides have an infinite potential for working in. Absolutely no doubt about it. So they offer a lot of opportunities for working in this field. However, the challenges are there. That is engineering the synthesis process or post-synthesis treatment. Because any metal oxide that we want to use for any application, we have to tune the properties of the metal oxide for that particular properties. And the challenge lies how you tune the properties. So different kinds of strategies have got to be taken up. So what are those strategies to tune the properties of the metal oxides to face the challenge and use the opportunities to the maximum extent possible? And those challenges I would like to say, these are certain challenges in the use of metal oxides to tuning their properties. Like for example, doping and mixing. Many of the labs in India, even in Patna maybe, using doping and mixing. And in the earlier lecture also we had seen that what the composition that we had to take up. So mixing and doping is one such method of strategizing how to get that particular property, specific property, that can be used for a specific use. Then we have polymer coating. Now doping mixing we have done. Lot of work. I have shown only 2 or 3 over here, doping mixing, but we have large number of papers on doping and mixing of metal oxides and used for the application of sensing. Then composite formation is there. You use 2 different metal oxides, you mix them together either by solid state reaction route or by any other metal synthesis method, and then use it for a different application. You have nanostructuring techniques, functionalization of the surface through various etching, etc. Heterojunctions with other oxides. So in our laboratory we have formed certain heterostructures, and we have used that for sensing application of carbon dioxide, hydrogen gas, H2S, etc. And a couple of papers we have in this area also. Then operating temperature optimization. This always, the metal oxides that have got the numerator, you need, or gas sensing, etc. What you need is always a higher operating temperature. And the challenge in the world is to get the sensor at room temperature. Because if you are using a sensor at a higher temperature, you are using a lot of energy also. So any sensor that has to be sold in the market today, that has got to be cost effective. So if you are using it at a higher temperature, naturally you are
increasing the cost. So the marketability will be very small. Then you have nanorods, nanowires, nanoparticles, and the whole world is buzz about the nanorods, nanowires, and nanoparticles. And then the last strategy that I have given in the red is what I am going to present today is techniques using ion beam irradiation. So we have gamma irradiation, low ion beam irradiation, swift heavy ion beam irradiation. In the form of gamma irradiation, we just have got, you can see from here, that you can see over here, a gamma irradiation induced. This has just come out in the June of 2025 in a very high impact factor journal. This work has come out, and I think it is going to be published on 18th September. So it is in the month of September itself that again gamma irradiated work has been accepted for publication. And then comes swift heavy ion beam. This is one of the pioneering works that we are doing in collaboration with the Inter-University Accelerator Center Delhi. And we just have a publication of this one in, you can see over here, chemical engineering having an impact factor of 13.4. So these ones we are using quite a bit. We are also working in the low ion beam irradiation. The only difference between the low ion beam irradiation and swift heavy ion beam irradiation is that when you are using a swift heavy ion beam, you are penetrating and damaging the material inside, creating defects inside. But you are not implanting the atoms inside the material. And if we are using low ion beam irradiation, that means those ions or atoms that you are sending inside the material metal oxides, they are being implanted either at the lattice sites or in the interstitials. They will not be creating defects. So the difference between the two things, swift heavy ion irradiation and the low ion beam irradiation, is that in the swift heavy ion beam you are creating defects, and in the low ion beam you are implanting an ion inside that material. That is what is important. So let us see what these are. Swift beam irradiation is an effective approach, because I know that most of the people here are not aware about the ion beam technology. Therefore, it is imperative for me to give some introduction about it if it is to be understood by most of the persons present over here. So I will be giving a brief about the fundamentals of what we are doing, and then if time permits, I will be going into the new research that we are doing, and I will be showing a part thereof. So, SHI, that is swift heavy ion beam irradiation, is an effective approach today. This irradiation is used to tailor the properties of metal oxide semiconductor thin films by introducing, what do? We are introducing defects in them, lattice strain, structural transitions, and other changes we introduce. And these very changes that we are introducing by swift heavy ion beam, those changes are being utilized for sensing application. Now, it is uninteresting what kind of morphological, structural, and optical properties of WO2 thin films based devices are changed, what properties are changed, and in what kind of applications we can make use of them. That is what my purpose is. Yes, one thing. So, एक बात बता दीजिए, मैं सर अंग्रेजी ज़्यादा बोल रहा था क्या? वो I'm so sorry, मैंने प्रॉमिस किया कि मैं ज़्यादा हिंदी में बोलूँगा और मैं बोलता चला गया. अच्छा, चेयरपर्सन का यही अच्छा काम होता है कि वो इंटरप्ट करके बता सकता है, सर थोड़ा सा मॉडिफाई कर. बहुत बहुत धन्यवाद. So, एक्चुअली जो टेक्निकल चेयर को करता है ना, उसको बहुत डिफिकल्ट काम होता है. जो बड़े बड़े स्पीकर्स बोल रहे होते हैं और टाइम ज़्यादा एक्सीड करने लगते हैं, तो एक छोटा सा पर्ची ले करके उनके सामने रखते हैं कि सर आप खत्म कर दीजिए, टाइम बहुत हो गया है. तो बड़ा डिफिकल्ट काम होता है. सो ये देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस को शो किया गया है इसमें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी के इसमें डिफेक्ट, जैसे ये येलो वाले कराए गए हैं, ऑक्सीजन वैकेंसी क्रिएट किया. आपने आयन बीम को इरेडिएट किया, वहाँ से ऑक्सीजन वैकेंसी क्रिएट हुआ, चार्ज वहाँ पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज किया और उस प्रॉपर्टी को आपने यूज किया. इसके एप्लीकेशंस इसके बाद में बहुत सारे होते हैं. डायइलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी में, फेरो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मेम रेजिस्टिव बिहेवियर, मेटल ऑक्साइड ट्रांजिशन, गैस सेंसिटिविटी, वेरियस काइंड्स ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर. कौन सा एप्लीकेशन आपको करना है,
आयन बीम के इरेडिएशन के बाद, उस पर डालने के बाद, इसके अनुसार आपको अपने मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टी को चेंज करना है, ट्यून करना है उसके अनुसार। तो चैलेंज है किस तरह की प्रॉपर्टी हमें चाहिए, किस एप्लीकेशन के अनुसार। सो इसमें दो चीजें, जब इरेडिएशन होता है, जब हम लोग रेडिएशन को डालते हैं मेटल ऑक्साइड के थिन फिल्म के ऊपर में, तो दो तरह की घटनाएं होती हैं। एक, अगर जो एनर्जी का रेंज है वो कम है, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एंगस्ट्रॉम के आसपास है, तो इसमें डोमिनेंट नेचर ऑफ इंटरैक्शन जो होता है वो इलास्टिक कोलिजन विद एटॉमिक न्यूक्लियर होता है। कैसे, अभी हम इसको बताएंगे। और दूसरा, अगर एनर्जी बहुत ज्यादा रेंज का होता है, वेव के ऑर्डर का होता है, तो वेव के ऑर्डर में आपको आयन भी जो है इसमें इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ हाईली चार्ज आयंस विद एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी अगर लो एनर्जी है तो एक तरह की घटना होगी, इलास्टिक कोलिजन होगा न्यूक्लियाई के साथ में, और अगर हाई एनर्जी है तो दूसरे तरह की घटना होगी। लो एनर्जी में जैसे मैंने बताया कि उसमें आयन इम्प्लांट हो जाएंगे आपके लैटिस में, तो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। हाई आयन बीम में तो पेनिट्रेट थ्रू कर जाएगा, लेकिन जब वो जाएगा तो जो ट्रैक से जाएगा उस ट्रैक में वो डिफेक्ट्स क्रिएट कर देगा, वो कई तरह के डिफेक्ट्स क्रिएट करेगा जो सेंसर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स या कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में जो काम करते हैं वो सभी के सभी परफेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। हमारा मटेरियल बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट। जो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में काम करना चाहते हैं वो चाहते हैं हमारा ऑप्टिकल फाइबर ऐसा हो जो बिल्कुल ही कहीं भी इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं हो ना। हम सेंसर वाले जो लोग होते हैं वो हम कहते हैं नहीं, हमको परफेक्शन नहीं चाहिए, वी डू नॉट नीड एनी परफेक्शन। क्यों? हम कहते हैं कि भाई अच्छा ऑप्टिकल फाइबर सीधा जाएगा, सारा कम्युनिकेशन होगा, कुछ लॉस नहीं होगा। हम कहते हैं नहीं, हम उसको थोड़ा बेंड कर देंगे, माइक्रो बेंड्स क्रिएट करेंगे, माइक्रो बेंड से लॉस होगा, और उस लॉस को हम टेम्परेचर, हम प्रेशर, हम करंट के सेंसर के रूप में यूज करेंगे। तो जो परफेक्शन उनके लिए चाहिए कम्युनिकेशन में, उसको इम्परफेक्शन बना करके हम अपने सेंसर में यूज कर लेंगे। ठीक उसी तरह से एक सॉलिड में एकदम परफेक्ट उनको चाहिए सारी प्रॉपर्टीज, ले लीजिए भाई, नहीं, हम अपने में डिफेक्ट्स क्रिएट करेंगे और उन डिफेक्ट्स को यूज करके हम सेंसर बना लेंगे। तो सेंसर वालों में और जो परफेक्ट काम करने वालों में यही है, वो तो बड़े परफेक्ट काम करते हैं और हम इम्परफेक्शन में भी, ये एक फर्क है। सो ये देखिए, जैसे अगर एक आयन बीम गया तो किस तरह का ट्रैक का फॉर्मेशन होगा। ये देखिए, ये जैसे दिखा रहा है आयन ट्रैक, यानी कि अगर आप ऊपर से एक थिन फिल्म के ऊपर एक आयन का बीम डाल रहे हैं तो आयन का बीम डालने से आप देखिए एक ट्रैक हॉलो की तरह से क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे और एक कूलम्ब एक्सप्लोजन होगा। आयन ट्रैक का कोर है, ये सॉलिड टारगेट है, तो अंदर जो डिफेक्ट क्रिएट होगा ये उसको एक सिंपल एक पिक्चर दिखाया गया है। और इसमें क्या है ना, अब यहाँ देखिए दो तरह के प्रोसेस हैं। जब आयन बीम अंदर जाता है तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्रोसेस। एक लॉस को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी लॉस। ये क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी डिपोजिशन इंड्यूस्ड बाय इलास्टिक कोलिजन दैट कैन क्रिएट कैस्केड ऑफ एटॉमिक कोलिजन इवेंट्स। अच्छा, ये क्या करेगा? डिस्प्लेस द एटम फ्रॉम द इनिशियल साइट्स कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूक्लियर एनर्जी लॉस एंड फाइनली प्रोड्यूस परमानेंट एटॉमिक स्केल डिफेक्ट्स लाइक पॉइंट डिफेक्ट्स, वैकेंसीज, इंटरस्टिशियल सेक्शन। ये इसमें क्रिएट करेगा। और दूसरा जो है एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लॉस होता है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फोटॉन के इंटरैक्शन के थ्रू उसमें एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है मटेरियल को, वो काफी हीट अप होता है और उसमें डिफेक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो दोनों का रेंज अलग है ना। देयर आर टू मॉडल्स। एक मॉडल हमारा है कूलम्बियन मॉडल, कूलम्ब एक्सप्लोजन मॉडल। इसमें क्या करते हैं? हेवी आयन बीम को हम भेजते हैं, ये वैलेंस, वहां से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कर देते हैं, इसके पीछे में पॉजिटिवली चार्ज आयंस रखते हैं। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री है सिंपल। इससे केमिकल बॉन्ड जो है सॉलिड का वो वीक हो जाता है, इससे कोलम्बिक रिपल्सन आयंस के बीच में पॉजिटिव आयंस बचे, तो उनके बीच में कोलम्बिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है और इतना ज्यादा कोलम्बियन रिपल्सन होता है कि देयर इज एन एक्सप्लोजन। एटम सारे पार्ट कर जाते हैं। हम इसको कहते हैं कूलम्ब मॉडल, इसको कहते हैं हम कूलम्ब एक्सप्लोजन मॉडल। दूसरा है थर्मल स्पाइक। आयन बीम आया, इसने एनर्जी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन फोटॉन कपलिंग के थ्रू ट्रांसफर कर दी।
थोड़ी देर के लिए फेम्टोसेकंड 10 टू द पावर -12 टू 10 टू द पावर 15 सेकंड के लिए सारी एनर्जी ट्रांसफर हो गई, बहुत ज्यादा हीट क्रिएट हो गया, मेल्टिंग हो गया, प्लाज्मा फॉर्मेशन हो गया और उसके कारण वहां पर सारा स्ट्रक्चर चेंज कर गया और आपको डिफेक्ट क्रिएट हो गया, इंटरस्टिशियल्स क्रिएट हो गया, जो कि एक सेंसर बनाने वाले के लिए फायदेमंद चीजें हैं। ना कूलम्ब एक्सप्लोजन और थर्मल स्पाइक, ये देखिए जिससे यहाँ पर दिखाया गया क्या चीज है। अगर ध्यान से देखें कूलम्ब एक्सप्लोजन क्लस्टर ऑफ एटम्स को कैसे होता है, बड़े वाले एटम्स जो हैं और उसके बाहर का जो ह्यू है वो इंडिकेट कर रहा है चार्ज, जैसे ग्रीन वाला है वो ग्रीन वाला जो है वो चार्ज है, रेड वाला है न्यूट्रल है। तो आप देखिए कि इसमें एनर्जी अगर गया और इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर की तरफ भागते हुए निकले, इलेक्ट्रॉन्स अगर बाहर निकलते हेवी आयन बीम से, पॉजिटिव आयंस बचे और उन पॉजिटिव आयंस के बीच में हेवी कोलम्बियन रिपल्सन हुआ तो एक एक्सप्लोजन की तरह हुआ। दिस इज कोलम्बियन एक्सप्लोजन। दूसरा है थर्मल स्पाइक मॉडल। इलेक्ट्रॉन फोटॉन इंटरैक्शन के थ्रू एनर्जी मिला, मेल्टिंग हुई और मेल्टिंग के कारण वहां का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इफेक्ट्स क्रिएट हो गया, तो ये कहलाया थर्मल स्पाइक। सो दीस टू मॉडल्स आर यूज्ड इन आयन बीम इरेडिएशन टेक्निक, जिससे कि हम बाद में रिजल्ट को एनालाइज करें। अब इसके आधार पर हम एक छोटा सा हमने जो अपने लैब में किया आयन बीम इरेडिएशन का, वो आपको थोड़ा सा प्रेजेंट करना चाहेंगे। और वो है कि हमारे पास में 120 मेव निकल 7+ आयन बीम हमने लिया, उसको हमने इरेडिएट किया WO3 थिन फिल्म। ये WO3 थिन फिल्म पर हम लोगों ने दो तरह से काम किया। पहला WO3 थिन फिल्म से वो हमने सिल्वर के साथ में डोप किया और सिल्वर के साथ में डोप करके उसको हाइड्रोजन सेंसिंग के लिए यूज किया और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी, जो कि बहुत ही रेस्पेक्टेड जर्नल है, उसमें वो वर्क हमारा पब्लिश हुआ। उसके बाद में हमने WO3 पर गामा इरेडिएशन किया और उसको फिर हाइड्रोजन सेंसिंग के लिए, हाइड्रोजन का आप समझ रहे हैं आजकल कितना महत्व है, हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज के बारे में बात हो रही है और इतना ज्यादा वोलेटाइल है कि जब अगर वो थोड़ा सा पार्ट भी अगर एटमॉस्फेयर में लीक कर जाएगा तो एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन में अगर कोई भी लीकेज है तो उसके डिटेक्शन के लिए हमें हाइड्रोजन सेंसर चाहिए। तो वी आर ट्राइंग टू डेवलप हाइड्रोजन सेंसर फॉर दैट। तो एक तो हमने टंगस्टन ऑक्साइड में सिल्वर की डोपिंग की और फिर हाइड्रोजन सेंसर डेवलप किया, उसका रिजल्ट हम लोगों ने प्रोड्यूस किया। उस पर गामा इरेडिएशन किया और गामा इरेडिएशन करके फिर उसका हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस की सेंसिंग की, वो हमारा कम्युनिकेशन स्टेज में है। और उसके बाद में हमने उसी WO3 पर हेवी आयन बीम निकल 7+ 100 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी उस पर हमने बम्बार्ड किया, इरेडिएट किया और उसके चलते जो चेंजेज आए तो हम लोगों ने उसको हाइड्रोजन गैस की सेंसिंग में फिर यूज किया। और ये थर्ड पार्ट जो है ये केमिकल इंजीनियरिंग 13.4 इम्पैक्ट फैक्टर में ये वाला पेपर भी रिसेंटली पब्लिश हुआ। सो जितने भी वर्क एक्चुअली हमने काम ये शुरू किया 2 से 2.5 साल पहले और 2 से 2.5 साल पहले में 7-8 ऐसे पेपर्स आए जो वेरी हाई इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल में। और इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि दिस इज अ न्यू एरिया, वेरी फ्यू पीपल आर डूइंग और हम जो भी काम कर रहे हैं नए काम की तरह से प्रोड्यूस हो रहा है। सो हम लोगों ने क्या किया है, सो दिस देखिए ये अप्रैल 25 में आया था ये और ये अक्टूबर इसमें आया था ना। ये तो सिंथेसिस टेक्निक है कि कैसे करके हम लोगों ने WO3 को सिंथेसाइज किया। एनीबडी हु इज इंटरेस्टेड इन दिस वन कैन गेट फ्रॉम आवर पेपर, और किसी को भी हमारे ये रिसर्च पेपर्स अगर चाहिए तो हम सर को PDF कॉपी भेज देंगे, वो आप उनसे ले सकते हैं, सारे के सारे के PDF कॉपीज। तो ये सिंथेसिस का तरीका है कि किस तरीके से हम लोगों ने WO3 सिंथेसाइज किया और किस तरीके से हम लोगों ने डिवाइस का भी फैब्रिकेशन किया है, पूरा उसके बारे में एक हम लोगों ने पूरा दिखा दिया है। किस तरह से स्टीयरिंग करना, ऑटोक्लेव में डालना, देन ओवन में डालना, कैल्सिनेशन करना, फिर उसके बाद में क्या है ये सॉल्यूशन प्रिपरेशन, सोनिफिकेशन, स्पिन कोटिंग और अनिलिंग थिन फिल्म एंड फैब्रिकेटेड थिन फिल्म हमारे पास है। ये पूरे हम लोगों ने किया। इसके बाद क्या क्या केमिकल रिजल्ट्स हुआ, इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड हमारे रिसर्च पेपर में आपको मिल जाएगा। देन वी हैव सिंथेसिस पूरा है ये ना। अब आते हैं थोड़ा आयन बीम इरेडिएशन के फंडामेंटल्स की तरफ, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर आल्सो देयर, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हम बार-बार कहते हैं कि हमने 100 मेव तक अपने एनर्जी को, आयन के एनर्जी को एक्सेलरेट किया।
सो हाउ डू वी एक्सेलरेट दैट? कौन सा ऐसा एक्सेलरेटर है जिससे कि हम बीम का भी सिलेक्शन कर लेते हैं, बीम आयन बीम हमें मिल जाता है, हाई एनर्जी मिल जाता है, लो एनर्जी मिल जाता है, हर तरह की एनर्जी मिल जाती है। तो थोड़ा सा बेसिक्स हम आपको बताना चाहेंगे। वो मुझे लगता है कि क्लास 12 में ही बहुत सारे लोगों ने वन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में पढ़ा होगा और सभी टीचर्स भी जानते हैं व्हाट इज वन डी ग्राफ जनरेटर, अच्छे से जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए वन डी ग्राफ जनरेटर बना था 1929 में। तो ये है एक वन डी ग्राफ जनरेटर। इसमें क्या होता है, दो बेल्ट्स होते हैं। यहाँ पर गौर करिएगा, ये बेल्ट पे यहाँ से हम इसको चार्ज देते हैं और ये चार्ज बेल्ट लेकर के जाता है यहाँ के इनर सरफेस को, अंदर के सॉलिड सरफेस को ये ट्रांसफर करता है और ट्रांसफर करने के बाद में ये वाला जो है इसको हम ट्रांसफर करते हैं बाहर वाले पर और यही पोटेंशियल हम लोग यूज करते हैं फॉर एक्सेलरेशन पर्पस। और क्लास 11-12 से लेकर के ग्रेजुएशन तक जो हम और आप पढ़ाते हैं उसमें सिंपली ये पढ़ाते हैं कि अगर दो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हो, बेसिक फिजिक्स, कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स हो और ये एक है और एक ये दो, इस पर कोई भी चार्ज रहे, इस पर कोई भी चार्ज रहे, अगर हम दोनों को एक थ्रेड से जोड़ेंगे, चार्ज विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द इनर स्फीयर टू द आउटर स्फीयर। भले ही अंदर के स्फीयर पर चार्ज बिल्कुल नेग्लिजिबल बचे, बाहर के स्फीयर पर चार्ज बहुत ज्यादा चला जाए, स्टिल द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम द इनर स्फीयर टू द आउटर स्फीयर। एंड व्हाट इज द रीजन? कि दोनों के बीच अगर गॉसेस लॉ से अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल ऑलवेज बी, दिस स्फीयर विल ऑलवेज बी एट ए हायर पोटेंशियल। तो जब हायर पोटेंशियल पर होगा तो हमेशा लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो चार्ज विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम इनर स्फीयर टू द आउटर स्फीयर और बहुत ज्यादा चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और दिस विल हेल्प इन एक्सेलरेटिंग द चार्ज। लेकिन ये पुरानी चीज हुई, ये हमारा आज का नहीं है, ये पुरानी चीज थी। अब इसके बाद में क्या है, यह इसके बाद में यूज में आया टैंडम वन डी ग्राफ जनरेटर। टैंडम यानी एक वन डी ग्राफ नहीं, 2, 3, 4 को एक दूसरे के साथ में जोड़ करके इस्तेमाल करना कि एक की जगह पर मल्टीप्लाइड इफेक्ट हमें मिले ना। इसमें आप देखिएगा कि यहाँ पर नेगेटिव आयंस इंडक्ट हो रहे हैं, ये नेगेटिव आयंस को इंडक्ट कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर एक चार्ज स्ट्रिपर लगा हुआ है, जैसे कार्बन का फॉयल हो गया, चार्ज स्ट्रिपर। तो ये और यहाँ से एक पोटेंशियल डिफरेंस हमने भी दिया इन दोनों के बीच में। अब आप खुद सोचिए, अगर Q नेगेटिव चार्ज है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो Q into V will be the energy gained by the charged particle. Students will know about it. अब एडवांटेज यहाँ क्या लिया गया कि जब यहाँ पर पहुंचा तो इसमें इसके नेगेटिव चार्ज को स्ट्रिप कर दिया गया, हटा दिया गया, निकाल दिया गया। अब वो बन गया एक्सेलरेटेड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और एक्सेलरेटेड पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ये V पोटेंशियल पर है और यहाँ ग्राउंडेड यानी जीरो पोटेंशियल आपने कर दिया। What will happen? Again you have a potential difference for a now positive charge particle. मजे की बात क्या है कि पहले जो यहाँ पर था ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है और यहाँ पर आने के बाद में हमने उसका नेगेटिव चार्ज अगर हटा लिया, पॉजिटिव बन गया, यहाँ का पोटेंशियल V है और यहाँ का जीरो कर दिया। Now V to zero again it will be accelerated। यानी जो पहले स्टेज में जितना पोटेंशियल हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एक्सेलरेट हुआ उसका 2 गुना एक्सेलरेशन हो गया बिकॉज ऑफ स्ट्रिपिंग ऑफ द नेगेटिव चार्ज एंड मेकिंग इट पॉजिटिव। तो इस तरह के कुछ और भी टैंडम अगर हम कर लें तो ये सारे के सारे हमारे इफेक्ट को बढ़ा देते हैं। ये तो हो गया उसका एक आजकल, लेकिन ये भी यूज में नहीं है आजकल। पेलेट्रॉन एक्सेलरेटर यूज में, पेलेट्रॉन एक्सेलरेटर में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन में क्या है कि जो आपका ये बेल्ट है इस बेल्ट को रिप्लेस कर दिया गया है। इस बेल्ट की जगह पर छोटे छोटे मेटल स्फीयर्स को यूज किए गए हैं और ये मेटल स्फीयर्स क्या है, कैपेसिटर की तरह काम करते हैं, 2 मेटल स्फीयर्स, जिससे कि इन पर चार्ज का स्टोरेज बहुत ज्यादा हो सकता है और फास्ट। ये भाई पर्पस क्या था कि हम चार्जेस को यहाँ तक पहुँचाएं जल्दी से जल्दी और ज्यादा चार्ज को पहुंचाएं। तो पहुंचाने के लिए पेलेट्स का इस्तेमाल किया गया जो ज्यादा चार्ज बियर कर सकते हैं, ज्यादा फास्ट उसको वहां पहुंचा सकते हैं। सो वी कैन क्रिएट अ वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस। सो नाउ वन डी ग्राफ जनरेटर हमने उसको यूनिट डबल कर दिया तो डबल पोटेंशियल डिफरेंस, और हमने पेलेट्स लगा दिए मेटल के तो पेलेट्रॉन में उसके कई गुना ज्यादा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया।
यानी जो एक्सेलरेटर आप सुनते हैं, जो आप IUAC में जाएंगे अगर कभी काम करते हैं, तो वहां का एक्सेलरेटर का ये प्रिंसिपल है जो कि आपको समझना है। और अगर एक बार मैंने आपको यहाँ पर जैसे बताया उसके बारे में, अगर आप बुक्स में देखना शुरू करें तो आपके बेसिक्स क्लियर अगर होंगे तो यू कैन कॉन्टैक्ट योर सुपरवाइजर। हम जो यहाँ पर सैंपल्स बना रहे हैं, हम भी उस पर आयन बीम इरेडिएट करना चाहते हैं। मैंने डॉक्टर प्रोफेसर संतोष जी को भी कहा है कि आपने बहुत काम किया है भाई कंडेंस्ड मैटर में, एक काम करिए, आप हमारे साथ जुड़िए, अगली बार वहां पर बीम टाइम के लिए आप अप्लाई करिए, प्रेजेंटेशन करिए, आपको वहां से मिलेगा। तो जो सैंपल आपने जिस पर्पस के लिए यूज किया है, अब देखिए आयन बीम के रेडिएशन से क्या फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, वहां प्रेजेंटेशन देंगे। और जो लोग फर्स्ट या सेकेंड ईयर में PhD कर रहे होते हैं, उनको वहां पर बीम टाइम बड़ी आसानी से मिलता है, जो फर्स्ट या सेकेंड ईयर में होते हैं। जो बाद में PhD के लेवल पर होते हैं, जो PhD कर चुके होते हैं, उनको वहां पर मिलना बहुत मुश्किल होता है। सो दोज हु आर ज्वाइनिंग PhD और आर इन द इनिशियल स्टेज ऑफ PhD, अगर आप लोग इस वर्क को एक्सप्लॉइट कर पाए, वहां यूज कर पाए, तो आपके वर्क की क्वालिटी में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। सो दैट इज अबाउट दिस, दैट इज द स्टोरी ऑफ द पेलेट्रॉन। ये है उसका एक्सेलरेटर जैसा आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से आयन सोर्स गया, ट्रिपल इसी में लगा हुआ, ये यहाँ से बीम आपने पढ़ा होगा QV/mv²/r, तो उसने उसने सर्कल पर मोड़ दिया और यहाँ से आकर के ये बीम एक्सेलरेट होता हुआ आया एनालाइजर मैटर। और यहाँ जो आपको बीम मिला यही हमारे सैंपल पर फाइनली आपको बीम मिला एक्सेलरेट करके, बेंड करके मैग्नेटिक फील्ड से, तो फाइनल बीम आपको मिला, वो बीम स्टेबलाइजर आपको मिला और वो बीम को आप अपने सैंपल डाल रहे हैं, उसको इरेडिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जो इस्तेमाल किया 15 UD पेलेट्रॉन एक्सेलरेटर, जो कि IUAC में है। UD मतलब यूनिट डबल, जो आपका नेगेटिव की तरफ से एक था वही डबल हो गया, तो UD कहलाता है। और इसमें हम लोग हमारे सैंपल का साइज है 1:1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया और 1 PNA करंट वाज यूज्ड। ठीक है, वैक्यूम है 10⁻⁻6 टॉर्क, इसको हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। और W3 फिल्म को W3 में एक लैडर वहां पर होता है जो रोटेट करता है, उस पर आप अपने रेडिएशन को डालते हैं वहां पर और घुमा करके बार बार सैंपल को चेंज करते हैं। और आप देख सकते हैं, मुझे लगता है ये मैनिंग बात थोड़े सफेद वहां पर दिख रहे होंगे, तो नेचुरली थोड़ा सा डाई किया होगा। अब पहले वहां ओरिजिनल मॉडल देख लीजिए ध्यान से, सफेद है। So this is me and my research scholars working over here. और ये उसका लैडर है जिस पर सैंपल को हम लोग अपलोड करते हैं। और जो आयन बीम हम लेते हैं अलग अलग फ्लुएंस का, मतलब कितने आयंस पर स्क्वायर सेंटीमीटर, कितने आयंस पर स्क्वायर सेंटीमीटर आप फ्लुएंस को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर दिखाया कि हमने 5 × 10⁻12, 1 × 10⁻13, 5 × 10⁻13 आयंस पर स्क्वायर सेंटीमीटर हम लोगों ने इतना आयन बीम को इस्तेमाल किया है। Now, this is time but only 5 minutes. So, ये होता है एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग ये पता पहले ही कर लेते हैं कि हमारे सैंपल में जितना हम एनर्जी दे रहे हैं, जिस तरह का सैंपल है, कितना उसका पेनिट्रेशन होगा, कितना उसमें इलेक्ट्रॉनिक लॉस होगा, कितना उसमें न्यूक्लियर लॉस होगा, ताकि हमारा कैलिब्रेशन पहले से रहे। तो ये हम पहले ही लॉस को एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। देन यहाँ आप देखिए डिफेक्ट कैसे, जब हम लोगों ने आयन बीम को डाला, यहाँ देखिए, यहाँ पर ये प्योर सैंपल है, WO3 प्योर सैंपल है। आयन बीम को जब हम लोगों ने ऊपर से डाला तो हियर ऑक्सीजन वैकेंसीज क्रिएट हो, और यही ऑक्सीजन वैकेंसीज आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज के लिए आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ना कैसे बीम टाइम, कितनी देर तक हम बीम डालें कि इतना करंट हमको मिले, उसका एक कैलकुलेशन होता है। तो ये बेसिक कैलकुलेशन दिखा रहा है कि किस तरीके से हम कितना बीम हमको चाहिए हमारे सैंपल के लिए और कैसे उसको हम कैलकुलेट करें ना। उसके बाद में शुरू होता है कैरेक्टराइजेशन। XRD का पूरा कैरेक्टराइजेशन 2 तरह का, एक प्योर सैंपल जब था बिना इरेडिएशन के, फिर उसके बाद में जो हम लोगों ने उस पर आयन बीम डाला, तो डिफरेंट आयन बीम के कारण क्या क्या उसमें चेंजेस हुए, हर चीज का कैरेक्टराइजेशन। एंड माइंड इट, अगर आप IUAC जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, तो वहां आपको फायदा सिर्फ आयन बीम का नहीं मिलता है, वहां आपको सारे कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स मिलते हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आप सोच लीजिए कि अगर आप बाहर कहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो कितने लाखों लाख पैसे आपके लगेंगे, और वहां पर ऑल ऑफ दीज आर फ्री और आप ही के लिए बना हुआ है। तो अगर आप अटेम्प्ट करके वहां टाइम दे सकें तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, सिमिलरली ये हमारा फेसल का है, सरफेस मॉर्फोलॉजी किस तरह का है, ये हमारा एएफएम का रिजल्ट है। दोनों है, बिफोर इरेडिएशन और बाद में इरेडिएशन, दोनों का रिजल्ट है। और क्या क्या चेंजेस हैं इसको डिस्कस नहीं, रफनेस किस तरीके से बढ़ जाता है ये हम लोगों ने दिखाया है, और किस तरह से रफनेस हमारे सेंसिंग में मदद करता है। तो इसमें रूट मीन स्क्वायर रफनेस जो सरफेस का है वो कितना से कितना हो गया ये हमने इसमें दिखाया है। यूवी आई स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हम लोगों ने दिखाया है, फिर इसमें ये दिखाया किस तरीके से आयन बीम का इरेडिएशन डालने पर, और हम लोग अगर उसका फ्लुएंस बढ़ाते चलते हैं तो कैसे करके उसका बैंड गैप घटता जाता है और उससे उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है, सेंसिटिविटी उसकी बढ़ती चली जाती है। देन FTIR स्पेक्ट्रा एंड दीज ऑल फैसिलिटीज आर देयर एट IUC। हालांकि हमारा कोलैबोरेशन और भी जगहों से है, लेकिन वहां पर ये सारे आपको मिलेंगे। रमन एनालिसिस पुलिस सारे का किया, जिनका हमने बिना इरेडिएशन के और पोस्ट इरेडिएशन का भी रमन एनालिसिस किया। फिर क्या क्या फर्क पड़ा ये हमने दिखाया यहाँ पर, और सारे कैरेक्टराइजेशन को एक्चुअली जब आप एक बात और भी बता दें कि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कई तरह के कैरेक्टराइजेशन कराते हैं अपने में, कहीं दूसरे शहरों से जाके कैरेक्टराइजेशन कराते हैं और सारे को रिजल्ट डाल करके और पब्लिकेशन के लिए भेजते हैं। जो आपका एप्लीकेशन है, जिस पर्पस के लिए आपने सैंपल बनाया है, गौर करिएगा, आपके कैरेक्टराइजेशंस उस पर्पस को एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं, इसको आप जरूर कोरिलेट करिए अपने पेपर में। आप क्या करते हैं भाई, जिस वाले हमें FTIR ने ये रिजल्ट दिया, हमें फेसेल ने ये रिजल्ट दिया, यूविस ने ये रिजल्ट दिया, XRD ने ये रिजल्ट दिया, और फाइनली वो कहते हैं कि हमारा सेंसर का सेंसिटिविटी इतना है। Now, how these characterizations are helping in explaining the result that you have got finally? उसको कोरिलेट अगर नहीं करते हैं तो आपने नॉलेज क्रिएट नहीं किया, सिर्फ एक लैब का एक्सपेरिमेंट किया। So correlation of all your characterizations with the results you are getting is very very important. अगर आप ये करते हैं तो acceptability of your paper increases. हाँ, ये फिर हम लोगों ने गैस के लिए दिखाया है इसमें, किस तरह से गैस के एजीडोप WO3 जब डाला था तब, ऐसे क्या इरेडिएटेड WO3 डाला तब, दोनों में क्या हुआ, हमारा सेंसर परफॉर्मेंस में क्या फर्क पड़ा, और इसमें एक और कॉलम ऐड करना है हमें बाद में कि गामा इरेडिएशन से क्या फर्क पड़ा। These are all recent publications. अभी मैंने 2-2.5 साल पहले काम करना शुरू किया। So if you can get into this technology, really start working sincerely, believe me, the papers will come thick and fast. Very nice papers will come and very good journals will publish them. ये गैस सेंसिंग टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने क्रिएट किया है ये, जिससे कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे करके वो क्यों बढ़ रहा है डिफेक्ट क्रिएशन के साथ में। एंड दिस इज आवर कोलैबोरेटर्स फ्रॉम IIT जोधपुर, वी हैव IUSC, वी हैव एंड डिफरेंट, दिस इज माय स्टूडेंट्स अराउंड मी। सो this student has done lot of work in at IUSC. He has also done it. She has also done lot of work over there. So lot of work has been done over there. इनको अभी नया BTR वहाँ पर मिला, ये जस्ट इन्होंने ज्वाइन किया PhD मेरे अंडर में, तो इनको वहाँ पर टाइम मिल गया है, इन्होंने प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन वहाँ किया और इनको वहाँ पर मिल गया है टाइम। तो आप भी अगर प्रोजेक्ट अगर आप PhD ज्वाइन कर रहे हैं या कर चुके हैं, अगर आप वहाँ पर फॉर्म भर दीजिए, प्रेजेंटेशन दीजिए, क्या करना चाहते हैं, मोस्ट लाइकली आपको मिल सकता है। So this is our group. And this is a big thank you for giving me the opportunity. Thank you. Thank you very much, sir. और मैं आप लोगों की अपॉर्चुनिटी को थोड़ा छीन रहा हूँ। क्वेश्चन सेशन को मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ, क्वेश्चंस अलाउ नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि बाहर से वक्ता जुड़े हुए हैं। 4 बजे उनको स्टार्ट करना था, 4:02 हुआ है, तो 2-3 मिनट का लिवरेज हम लोगों से ले सकते हैं। बट सर कल तक हमारे साथ हैं, अगर किन्हीं के मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ लेंगे, यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, आप सर से कनेक्ट होकर के पूछ लेंगे, ड्यूरिंग लंच या ऐसे भी खाली रहेंगे तो आप बातें कर लेंगे। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट।
और सर ने बहुत ही अच्छा, बहुत सरल शब्दों में एक भारी काम को इतने आसानी से बताया। और ख़ास बात ये थी कि डिफेक्ट इंड्यूस्ड, जो हम लोग परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो नहीं, उसको पहले तो इम्परफेक्ट बनाओ और इम्परफेक्शन के फ़ायदे का फ़ायदा उठाओ और उसको अपने इस्तेमाल में लाओ। मोटा मोटी यही काम था। तो बाकी एक छोटा सा मैं इंटरप्शन करूँ। थॉमस हार्डी, अ ग्रेट राइटर इंग्लिश के, उन्होंने कहा था, और उन्होंने किसी और के लिए मत समझिएगा, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए कहा था। उन्होंने कहा था, आई नो दैट यू आर नॉट द परफेक्ट वुमन, बट फॉर मी आप परफेक्ट हो और मेरे लिए आप इम्परफेक्ट हो। And believe me, it is this touch of imperfection that makes you approach toward the perfection. So imperfection बहुत जरूरी है आपको परफेक्ट बनने के लिए। और बहुत आसान आसान एग्जाम्पल्स की मदद से कि जब आप आयन बीम को इरेडिएट किए तो उसने एनर्जी दिया, ऑक्सीजन वैकेंसी क्रिएट कर दिया। अब एक ऑक्सीजन वैकेंसी का क्रिएट होना बहुत सारे फिनोमिनन को जन्म दे देता है। अब चार्ज इम्बैलेंस होगा, पूरा मटेरियल जो है वो छटपटाएगा कि भाई कैसे चार्ज बैलेंस बनाएं, उसको कैसे स्टेबलाइज करें, कैसे मिनिमम एनर्जी के स्टेट में जाएं, और वहाँ से फिर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पैदा होने शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आयन बीम को इरेडिएट करके उसके अंदर में नए प्रॉपर्टीज़ को, जो प्रॉपर्टी हम लाना चाहते हैं, डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ को पैदा करना, जैसे कि पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर में हम लोग करते हैं कि एक विधायक को खिसका दो और अब जो सरकार होगी उसका नेचर अलग होने वाला है, क्योंकि अब अलायंस में जाना पड़ेगा, मेजोरिटी की सरकार नहीं रही, तो अब उसका कैरेक्टर, और जब मेजोरिटी में था तब का कैरेक्टर अलग हो जाता है। मैं इशारा आगे का नहीं कुछ कर रहा हूँ, ऐसा मत समझिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, और सर को बहुत बहुत धन्यवाद, पटना की ओर से, बिहार की ओर से, टीपीएस कॉलेज परिवार की ओर से। जी जी, मैं स्लाइड शेयर वेट Now, is my slide visible? Good afternoon, our esteemed speakers, fellow researchers, my colleagues, and everyone present here. It's my pleasure to welcome you all in the international seminar titled Recent Advancements in Basic and Applied Material Sciences. Today, we gather to share our knowledge, expertise, and innovations in the field of material science, and I am honored to be part of it. I am Shwetanshu Mala, Professor of Physics at Patliputra University, and I will be chairing the session starting 4 to perhaps 5 p.m. There will be 2 talks in this session. Every speaker will have 25 minutes for presentation and 5 minutes for questions and discussions. Dr. Pratyush Kumar Mishra from Oxford University, UK, will be the
first speaker who will be enlightening us with his talk titled Chemogenetic Platforms for Live Cell Imaging, Sensing and Interaction Mapping. Pratyush Mishra, currently a research associate at the University of Oxford and the Rosalind Franklin Institute under the Wellcome Trust Discovery Grant, he earned his master from IISER Pune and moved to earn PhD in chemistry from UNIST South Korea, where he developed novel photo-cross linkers and proteomic tools for studying molecular interactions in live cells. His postdoctoral research at Seoul National University further advanced proximity leveling chemistries and enzymatic probes for spatial proteomics. Dr. Pratyush Mishra's work focuses on chemogenetic tool development, chemical biology, and proteomics with application in understanding bacterial drug resistance and cellular signaling. He has received multiple awards, including the Chemical Science Oral Presentation Prize, Royal Society of Chemistry, and several Best Poster Awards at different international conferences. With a strong publication record in high impact factor journals such as Nature Communications, Nature Chemical Biology, ACS Central Science, Dr. Mishra continues to pioneer innovative approaches to probing dynamic molecular networks in biology. Now, Mr. Mishra, the floor is yours. We are waiting for your enlightening talk. Thank you very much, Professor, for kind introduction. And first, I would like to thank you, everyone, arranging this conference and giving me opportunity to present my work. So, as Professor mentioned, I started working on chemogenetic tools to study cellular architecture and interactions. So, why we need to study cellular architecture and interactome? So, there are protein transcripts, DNA architecture, and cellular networks. Overall study of all these in a spatial manner, where what is located and how it interacts with the other entity, is called spatiomics. So as a group, several scientists came together and decided to study this kind of work. For this, we needed to develop some tools which can identify the population residing in a specific location. For that, we developed proximity labeling tools. So for proximity labeling, to enlighten everyone how it works, let's say this is the area on which we want to look at what is there. We introduce an enzyme which is marked in yellow, and this enzyme can be seen as a straight hand which can emit any activated probe to label everything nearby. And generally this is tagged with a biotin probe, and we can see this probe enriching nearby proteins and enlightening us what is in this small square box. And this box is known as proximity labeling radius, which is counted from the enzyme tag. So depending on how large and small is the proximity labeling radius, we get the idea of everything around that tag enzyme. So first enzyme developed in this field was Burette. So what Burette does is it takes a specific set of peptides with a specific sequence. It utilizes biotin plus ATP, and using this ATP and biotin, it makes biotin AMP, which biotin AMP can attack the lysine on a specific peptide, giving us the tag peptide. And this biotin is very important. It can be enriched and later can be identified in mass spectroscopy. However, it causes a problem because this Burette enzyme is selective to this particular peptide. Several groups came together and decided to mimic this Burette and make several mutants of it. One of those mutants, Burette R118G, cannot distinguish any peptide from the sequence. So, when you provide biotin with the ATP, without differentiating any peptide, it labels all the peptides uniformly, giving us the information of all the lysines available in that region.
However, this beret was very big protein. Sometimes it causes problems in the cellular localization of the protein we are interested in. So people came together again and decided to modify the N terminus, C terminus, shortening the C terminus, or taking this same enzyme from another species. And gradually they started to reduce the size of it, and from 25 kilodalton up to 28 kilodalton they have successfully utilized. This is a brief history of the development. This is the original beret from which R118 was created in 2004. It took almost 8 years to make new bio-ID, and then 4 years to make bio-ID2, and then development accelerated, and recently we developed several turbo ID which requires very little time, that's why turbo, and then we have micro ID which has very short labeling radius. However, all these enzymes require biotin as a substrate. However, as a scientist, we all see that biotin has large scope. However, sometimes it is not possible to utilize biotin owing to its solubility and its natural localization. So people are still working on finding a new enzyme which can accommodate any other probe which is not biotin. So this is the focus. This part of the talk was focused on tagging the lysine within a labeling radius. However, this is not the only enzyme. There is also HRP, horse radish peroxidase, which is traditionally used in cryo-EM imaging or imaging using the osmium tetroxide. This enzyme had several disulfide linkages, which are very much important for the folding of this protein and retaining the activity. However, in some environments of the cell, let's say in ER, there is a high redox reaction, redox environment, and several redox reactions are going on. In those reductions, some of these cysteines can be broken into thiols, disulfide to thiols, and the secondary structure of protein is broken and rendering it useless. So overcome this, Ellis-Fink group from Stanford came forward to develop, instead of horseradish peroxidase, they have taken soybean ascorbic acid peroxidase, which also has the same beam moiety and it does not have any disulfide linkage, by which we can utilize it in high redox condition, making exactly same substrate and same applications. However, she noticed that when apex is tagged to one side of the membrane or another side of the membrane, depending on which side is exposed to apex, it can generate different kind of labeling, giving us information that this protein has C terminus on the outside or the inside. That helps us in identifying several proteins for which terminus information was not available. However, it was not only limited to that. People can also make half of the apex on protein A and half of the apex on protein B. When protein A and B are interacting, this complex can act as a molecular glue, and this active apex can be used to carry out the reaction. Using this, they have taken mitochondrial outer membrane tag FKBP and ER tag FRB. When these two proteins come together, they generate the apex and we get the signal. So this has been a very useful tool to identify the orthogonal contact sites. And using this, you can see the mitochondria marked as M, and one side of the mitochondria is more contrast. That signifies it is in contact with the ER. So these kind of tools can be used to identify if mitochondria is interacting with the ER or not at that given moment. However, this apex can also activate the tyrosine of the protein, similarly providing like a bio-ID type map. So utilizing peroxidase and tyrosine exposed protein, when you provide hydrogen peroxide, phenoxy radical is generated, and this phenoxy radical can be used to couple tyrosine of the protein, making protein tagged with R group. R can be biotin, azide, alkyne, or anything else you want, maybe fluorophore or anything. So using this technique, people have identified several proteins which were not previously identified. And there are chemistry groups as well as chemical biology groups focusing on development of several
phenolic moieties such as phenol, aniline, naphthalene, and several others. And not only containing biotin but also alkyne and several substitution on the aromatic ring were also explored. However, not only that, this Apex HRP system can also be used to sense the hydrogen peroxide, since it contains catalytic cycle which has the heat, oxidation and reduction. So each cycle of this catalytic reaction requires two hydrogen peroxide molecules, by which if you have endogenous level of hydrogen peroxide production using Apex, you can use biotin phenol probe which can label the protein, and depending on the labeling you can know if there was peroxide present at that moment or not. So people have identified that there is a matrix which is mitochondrial protein tagged with Apex2, and when desbiotin phenol was provided, when manadione which is also vitamin K in general terms, when 30 micromolar was injected to cells, it started producing a lot of hydrogen peroxide. And most of the time doctors just prescribe manadione to patients, however it is not sensible to eat it in a high concentration. So this is one of the applications which can be solved by peroxidase. Not only that, since this phenol moiety can be tagged to the protein in presence of Apex, we decided why not use this phenol with the copper chelating moiety to direct our probe to the protein where we want it. So in vitro we tested that this probe can modify the BSA, and also in the cell when we expressed our Apex on the live cell surface, we thought copper bound ligand can be directed to the cell surface only. The beauty of the system is, even though there are cells all over the place, however, cells which are expressing Apex can only do the click reaction. So by doing this, we can control the genetically modified cells and ask them to carry out the click reaction. So this is one of the controllable methods using the enzymes. Sometimes when we are working with the human tissue or animal models, we have a problem of not being able to genetically modify the organ. For that, we developed the HAFP frontal body system conjugated with Apex2. This Apex2 can target any of the ligand receptor system which can be replaceable and interchangeable. By providing Apex on the cell surface, you can create again a microenvironment with a copper-rich system and carry out the copper click reaction when both of these antibody type system is available. We tested this on HA tag as a receptor and anti-HA alpha Apex2 as a ligand, which is shown in this picture as well, where you see only signal when there is everything present with the antibody bound target. All the previous techniques, they were not able to identify metabolome because metabolites do not have any phenol or lysines. So we decided why not use our copper click based system to make artificial alkyne azide copper click. And as you can see on the top lane, when propulsion, choline, BTTA, copper and peroxide all were provided, the lipid were lit up with the sodium ascorbate and azidocoumarine fluorescence. Why? When any of these things were missing, we did not see anything. So it can be a tool to study metabolome as well. We decided to explore cell surface system. So this was a bit complex system where we were expressing Apex on the surface of one cell, which is marked in red, and we provided manganese which will be expressed on the cell surface on the other cell. When we mix two populations, the green cell and red cell, some of them will be contact. When this contact will be made, we can carry out our copper click reaction. Copper click on the Apex side of the reaction can label the azide on the other side of the reaction. So as you can see in the figure B top plane, only part which is interacting with the green cell is lit up with the cyan color. So confirming our hypothesis that we can precisely control the cell interaction points. However, this has many potentials and we have
explored many things in this direction. But it still does not give us information that what is interacting with what. We know that protein of interest marked with QI and green system as apex, and when we activate this system, everything within 10 nanometer is labeled. However, we don't know if who is interacting with QI. To make that, we decided to make a crosslinker with QI. When crosslinker will be activated with blue line, it will only crosslink with A instead of all other proteins. So this is one of the systems we developed for photo crosslinking. The hexachloro system can be targeted to the halogen mark as a bucket here, and FKBP. FKBP interacts with FRB in presence of rapamycin. So when we introduce rapamycin, these two proteins will come together and this probe will cross-link to FRB, and this can be visualized by Western blot. So this turned out to be a very good cross-linking system. Using our system in 2020, we decided to move into COVID-19 pandemic resources. So we also try to identify N protein of the SARS-CoV virus, and we found several stress granule protein, viral host protein, and antiviral proteins. This gave us a lot of idea about how viral dynamics works inside the lipid cell. After that, we decided we have done a lot on development of the tool system. We should move on something which can be applied to the general pharmaceutical and research purposes. So now at Oxford, we are working on to identify the dynamic outer membrane architecture. So E. coli is a gram-negative bacteria, and gram-negative bacteria is made up of inner membrane, a slim peptidoglycan, and outer membrane. This outer membrane is caused by phospholipid on the one side and lipopolysaccharide on the other side. So despite this phospholipid are uniform, and LPS layer is a bit tricky. So we are trying to identify how this LPS layer moves and how it is synthesized and transported. We have used similar protein cross-linking systems to identify there are several interactions on the outer membrane which cause the island-like structure when bacteria is facing stress. So current goal of our research is to identify how the islands are made and how they are distributed after the stress is gone. So one of the targets we found that using the AFM imaging, we can see the hexagonal structure forming. This hexagonal structure is formed by treating the polymyxin or colistin drug molecules. So maybe it is core, maybe it is not, we are not sure yet. However, this is our hypothesis that outer membrane LPS, when polymyxin comes together, it causes a bulge in the outer membrane, making a lipid-like bulge which can be transported to other places and making a hole in the cell, causing the E. coli cell death. The polymyxin is supposed to be, polymyxin is believed to be interacting with the LPS and lipid A. However, these are very preliminary studies. There is no concrete evidence. So we are working on proximity labeling tools to directly cross-link and enrich those cross-links to prove that this system once existed. However, this is turning out to be a much difficult than we initially thought, because as soon as we treat polymyxin, bacteria starts to swell up and loses its integrity. So we are in the process of making less of polymyxin so that reaction is not so vigorous and we can successfully study it. Currently, I am focusing on making a new variant of polymyxin. So generally, it is synthesized from the solid phase peptide synthesis, and after that, selective cleavage, cyclization, and final modification here. So this final modification site can be a apex directed probe, cross-linker directed probe, or any other fluorescent markers. So this is the current stage of our research, and I would like to thank Professor Bengalis in Pharmacology, Professor Shabaz Muhammad in Biochemistry, and Rosalind Franklin Institute, as well as I would like to thank all the organizers in the T.P.S. College,
especially Susavana, who helped me when I was a kid undergraduate in IIT. Thank you very much. So if there is any question, I would like to. Yeah. You gave an excellent presentation of what you are doing in your research work. That is postdoctoral research work. Any questions? Floor is open for questions from audience. इसको काम यहाँ कोई लोग कनेक्टेड होगा इसलिए ऐसा हो रहा है। Thank you. ऑन ऑफ कीजिए There is no question. We move on to the next talk. But before that, I thank you, Professor Dr. Pratyush Mishra. You gave an excellent talk, and I'm sure many of the young minds must have been ignited by the work that you are doing. I'm professor of physics, and it was difficult for me to get information from your research, but you must have ignited many young minds to come in this field and contribute their potential. Thank you very much. Hello. The next speaker is Dr. Lakshman Singh from Siddharth University, Siddharth Nagar, India. Dr. Singh will acquaint us on advanced synthesis techniques for energy storage material. Dr. Singh is an accomplished researcher in the field of material chemistry. He obtained his PhD from the Institute of Science at IIT BHU and has over a decade of research and teaching experience, including nearly 5 years abroad in France, China, Japan, and South Korea. He has published more than 75 research articles, has 6 patents to his credit, 5 internationals and 1 Indian. He has authored books with reputed publishers like Taylor and Francis. His research expertise covers nanomaterials, ceramics, perovskites, and energy-related materials for applications such as batteries, fuel cells, and supercapacitors. He has been also recognized with Young Researcher Award in 2021. He serves on many of the editorial boards of international journals. We are delighted to have Dr. Singh with us and look forward to his valuable insights. So, Mr. Lakshman Singh, we are eager to listen to your talk and maybe many of us may learn something from that. You can start now. Thank you, ma'am, for nice introduction.
Good evening to Professor Apan Panel sir and good evening to Professor Vipin Kumar sir as I see that and all of the faculty members and the audience students. My screen is visible. Hello. My screen is visible. Yes, sir. Serious. And PPT is also visible. Okay, thank you. So today my lecture is on the advanced synthesis technique for energy storage materials. And we know that the energy requirement for every electronic device and everything is needed for the advancement of the modernization. As we know that the television, batteries, and other things they are need to make a research on the going on the energy material to discover these type of batteries. We know that the nanomaterials is a new area where we are using the various type of nanomaterial like cathode material, anode material, and other type of material which are using it in obviously capacitor and other form like that, hydrogen fuel cell and other electronic devices. As you can there is a always continuous demand for the modern age of science. We have to use the notebook, computers, cameras. Everywhere we can see that there is a energy needed. And we have also vision of the 2027 without the because India is a huge population country and this demand for energy is very huge. So we fully requirement of the energy. This can be happen by using the various type of chemical material, batteries, because the we know that the renewable materials like petrol, diesel, and which are very limited in quantity. And for that purpose, we know that various electrical vehicles also are marketed and also some in Australia and South Korea and other Korean countries, they are using the hydrogen fuel cell. So here I can discuss about the how we can the energy in the chemical. So we know that the chemical also known as condenser, and the chemical always providing static power, and that static power for use for the every electronic device for integrated system. Also, it is used in the space system, also design system because it provides the static power. As we know that presently we are using the various nitrogen and other like organic compounds. But we are the chemists. So we are chemists always focus on the nanochemistry. Nanochemistry means we have to design the substance which are using in the medical for like a chemistry, and other types. Because at atomic level and nanoscale level we have to integrate these materials to synthesize these for the electronic device to supply the energy. As we know that this can be happened into the nanochemistry. We know that the first computer discovered by the Charles Darwin, it can occupy a large huge space, a room. But now we can see that there is various creation of a modernization. We can see that laptop, laptop, also they can provide let's say quantum dot TV. How this happens? This can be happen in the nanochemistry. So nanochemistry, all students are use this nanochemistry to design substance for every to produce the material. So here we can discuss only this how we can synthesize the material. There is a two type of demand for the as we know that the chemical material are used in the condenser. So that is multi-layer chemistry. In multi-layer chemistry, dielectric substance is used. So what is the discussion going on?
the research is going on in two ways. One way is that we have to synthesize the material consciously, or we have to make it new material or innovative material which can actually high energy storage chemistry. So for that purpose, there are lots of methods we are utilizing, like the physical method, chemical method, and biological method. In physical method, there are lots of like chemical method, vapor diffusion, and other methods also we use that. In chemical method, there are distribution, solid layer method, microemulsion, hydrogen synthesis, fluorochemical synthesis, and microwave synthesis. As you know that the chemical synthesis and microwave synthesis are also a very fast method which are using to in a few minutes you can synthesize the nanoparticles. And solar method and hydrothermal synthesis also utilizing to synthesize the nanoparticles for the as a chemical material. But and also biological method also are utilizing now synthesis using the plant extract synthesis using enzyme and chemical measurement. This is also known as the green synthesis method. So here we can discuss the what method we can utilize to propose to synthesize the chemical material which cannot be reported this time. So presently the chemistry is using everywhere. Not only electronic device, it is also used in the nuclear system, also in used in the missile system and space system for the sector. Now these days we are using the various cycles on lead magnetic neutronic oxide as a chemical material. The problem is that in that circuit, the dielectric constant is very low. It is from 1000 to 2000 and dielectric loss also 0.02. The problem with the lead magnesium aluminum oxide is that it is not eco-friendly. We know that the lead is a toxic material and not eco-friendly material, so we want to replace that material. Secondly, variable titrating. Nowadays, the commercialized chemical and nuclear is using chemical or dielectric material is a variable titrating. So, variable titrating is a peroxide material every dielectric process is always 8,000 room temperature. Second problem is that the dielectric loss also is not good. It is 0.01 to 0.3. The main problem is that these chemicals low dielectric constant along with they have the phase transfer material. Phase transfer means they are not stable with the temperature. At high temperature they are phase transfer, so it is not a good material. So we have focused on to discover the new material or such type of material which have the high dielectric constant along with they have environmentally friendly material. For this purpose, for to make a ideal chemical material, you need to make a material which has a high dielectric constant more than 10,000 and also the dielectric loss may be less than the 0.01 and the thermal stability between temperature dependency of the that chemical material made more than 100 degrees centigrade. So also whenever we use that first type of material, the dielectric constant not vary with the temperature because if the dielectric constant vary with the temperature and that temperature material not a stable material. Also the dielectric constants vary with the frequency within it is not also difficult to use as a chemical material. So we are focusing on that. First one, we have to use first type of metal having the dielectric constant more than 10,000 and the stability. Stability also very because whenever we use the chemical material in space system and other electronic devices, the thermal stability also will be good. More than 100 degrees Celsius, it should be a good material for the energy material. For that purpose, we have to use a compound which is known as calcium copper and that calcium copper is also known as CCCO compound. This CCCO is brought to the ADO3 type of site
And this family is a very large family, and here we can replace only many metals like calcium, barium, and protein. So this compound also be good for a high dielectric constant and can be used as a chemical material. For this purpose, we have to synthesize this CC2 material because it has a high dielectric constant, more than 10,000. Also, it can be observed that the dielectric constant is frequency independent up to 10 megahertz. And for this thermal stability, the dielectric constant is stable up to 100 to 600 Kelvin. So this is the structure of the CCP compound. So where calcium, copper, oxygen and nitrogen. So this structure is a given phase type structure and we will given type structure. Now this material having the TiO6 of the hydra and we have the property of dielectric material property depend upon the exists item its TiO6 of the hydra. So there is a lot of story on those materials. Why this material has been high dielectric constant. So for that, because there is a two type of stories are reported like intrinsic properties and extrinsic. In the case of intrinsic properties, it can be suggested that these materials, PCM type, this material are the polar material and also local dipole moment in the TiO6 of the hydra, we have the TiO6 high plus hand ability high value process. In the case of the extrinsic property, whenever we see these materials, they have a ability to transfer grades like semiconducting and insulating grade. And these semiconducting grades and insulating grade are contribute to high dielectric constant. So it is the CCTO having heterogeneous structure which is able to give the high dielectric constant. So we need to high dielectric constant with the capsule material because it is always to the large number of applications. So high dielectric constant may be attributed to two factors as I discussed earlier. So now the problem is that how to get the high dielectric constant and low loss in situ. There is a two type. We can substitute the different type systems into the institute system like A type and B type. So where we can replace by calcium, magnesium, sodium, cadmium, and also rare earth metal like lanthanum, cerium, and also copper may be replaced by the doping we are using for that purpose. Zinc, manganese, iron, and cobalt and magnesium, and also we can use the iron in vanadium and lots of cation we can replace this and we can search that how much doping can be used to increase the engagement of the dielectric constant. Second study is that we have to use the different synthetic methods. Like that, dry method means solid state reaction method. Solid state reaction means we have to improve the metal oxide of this material and using the ball milling and mechanical method, we can synthesize this type of materials. Secondly, we have to synthesize using the base chemistry method. Base chemistry method means soft chemistry method. We have to make a solution and make this practical by using the different solvent synthesis, autocomposite synthesis, ferrofiner analysis, hydrothermal synthesis. There is lots of methods are used at times. The third one is semi-based method. As we can see that in CC0, titanium is a important constituent of that material. For this purpose, we have to use the titanium as a titanium solid oxide. So that is a heterogeneous type of mixture, and this method has been firstly reported by our lab. This method is known as semi-based method. Because it is a heterogeneous type of mixture, not only completely bad or not only bad. Different processing parameters are also used to enhance this dielectric constant between dielectric loss
we have to choose the lots of parameter like that simping temperature and simping time and simping atmospheric pressure and also we can use simping temperature like release of oxygen, nitrogen and other gases we can also use to discuss about the dielectric constant properties and how these properties are can be enhanced by using the different synthesis method or different processing parameters. For earlier we can see that there is a lots of substitution on the CCTU and there is a lots of variation in the dielectric constant like titanium we can replace by the iron, cobalt, nickel and magnet and it can be shown that the dielectric constant always increase with the substitution of the iron. Also we can replace by calcium by platinum and the dielectric constant also be enhanced by substitution. And this is the first type of study we can use to enhance the dielectric constant and lower the dielectric loss, which is required for the ideal capacitor used in the industry. For filtering time, if we have to choose the time, then we can enhance the time. We can filter the samples by 0 hours, 4 hours, 8 hours, 10 hours, 3 hours, and whatever we choose. This is can see that if we have enhanced the time of filtering or during the filtering temperature, the dielectric property also enhanced by the filtering time and filtering temperature. This can be also utilized processing parameters to design the material. For our purpose is that to define or to make such type of material which is having the very low cost or very economically fruitful to design to total PCQ performance. For this purpose, we have to discover a new method, non-aqueous synthesis of this type of compound. The main advantage of this method of this PCQ compound is that for this synthesis method, we have to use the solid KIT, where we can, as a technical tool, as we know that for the with chemistry pattern, there is lots of step or multi-step is there, and it is also consuming the time. And for this purpose, we have used the solid chemical as for continuous use. That we can synthesize using the taking the as a solvent as a two methods called hyaline glycol, where we cannot use the solution for this purpose. And we can see that there is a lot of difference between the dry method and wet method because when we observe that when we simplify using the solid state method, it takes a long time of reaction, high temperature and it needs a very tedious work. And also sometimes there is more to the single phase of the material and there are lots of secondary phase of copper oxide, titanium oxide and other phases are present. For weight chemistry method, as I already told that the titanium is very highly costly in the form of the something like titanium iodide, peroxide, and the type of the chloride. So we have used our method like that polyphenol to make the comfortable and the look economically cheap capsule material. So first we use to synthesize this method by using the various solid oxide tools like that citric acid, glycine and other. And these can act as a tool as a oxygen and we have used the KIC as a solid powder in place of the titanium oxide chloride or titanium oxide nitrate. So this is the simple procedure where we can see that we have to use the metal lighting solution, this solid PIC, and mixing them with magnetic stirrer and cancellation that by 800 to 8 degree to 8 hours, grinding pulverization and something time of less to 9 to 12 hours and for that procedure purification.
And in this second element, we can see that the timing of the synthesis, if we can do the solid distillation, it is a very 48 hours to 60 hours. But in the case of the standing element, it can take only 24 hours. So here is a comparison of different synthetic routes. And here I can see, you can see that atomic plant synthesis, chemical route and conventions of the solid route. In this chart, we can see that we use the automatic plant synthesis or non-autonomous plant synthesis method. Here we can see that this method only takes to 30 to 50 minutes only to make a proposed cargo of the that one. But in the case of chemical route, there is a lots of multi-step is there, make a stop solution and put a manganese T.S and also with the oxidation with oxidate two line chemical glycine glucose and it also takes to water state evaporation like to 8 to 10 hours. In the calculation temperature is also required. In the case of convention, it can also take a multi-step and it takes it 40 to 48 hours. But where we can see in the our discount method or the method, it takes only 30 to 15 minutes. So this method is utilizing in the project process. So we have used the various type of concentration like BGA, XRD, scanning electron microscopy, energy discovery, X-ray spectroscopy, neutron electron spectroscopy, and measurement of dielectric and electrical properties. So this is the flow chart of to synthesize the mg dose LCQ. Here we use the replaced by the calcium alumina and we have dosed the magnesium at copper side. So this is the systematic representation of the method. We have to leave only 10 to 15 minutes to qualification of to their material and we can see that the solid PI are using in that purpose and after magnetic spinning it can take only 30 to 35 minutes. In the case of the weight chemistry method, it can take magnetic spinning always take a long time like 8 to 10 hours or sometimes it can take more than 1 day. So for this purpose, we can get the whole process to 55 to 65 minutes. So this is the huge successful of that method to synthesize the metal or subject material in a very low time or we have to use the green chemistry process. We have to save the energy for in this method. So here is the XRD of the gas material where we LC synthesize using energy of material and we have compared this XRD to the previously produced CPQ and it can see that the fingerprint material is present with some amount of copper oxide. The copper oxide is present because we have synthesized this directly synthesized this sample is more than 1000 degree centigrade temperature. It means that sometimes the copper oxide phase as is melting from is present in the grain. And this phase present in the grain also present in the high dielectric solution of the sum of the material. So here we can see that in single steps. In a single step shooting of that material, we can make a single phase material not we can use the calculation temperature. So pre-calculation temperature is very required because we cannot use the organic fluid like exciting and like in that. So here is the scanning electron microscopy. In scanning electron microscopy, we can see that SEM image. We can see that biomodel formation of the grain. In the biomodel formation of the grain, there is two types of grain, some are very large size, some are very small in size. These grains have a size
between the micrometer 1 micrometer to we call higher micrometer. These grains are very biological in nature. And for this purpose, we can see that the average grain size is very between the line of 2.5 micro and 0.1 micrometers. We are using for the energy dissipation X-ray method for to determine the composition of the materials inside. Clearly, we can see that the laminar mentioned proper type of oxygen is presented uniformly and we can say that the material synthesized is very pure in composition and the element composition and uniformly distributed. And here is the dielectric property of the LCQ and LCQ material. We can just share dielectric constant is space dependent and also we declare that the dielectric constant of this LCQ is higher than the LCQ. And also we can see that in the graph, the dielectric loss of the LCQ is lower than the LCQ. It is a good material because when we compare that the magnesium solution is a good to see that because it provides high dielectric constant as well as the low dielectric loss. Here the dielectric constant, these graphs showing that the dielectric constant frequency represent dielectric constant at the various temperatures. And we can see that at the lower frequency the dielectric constant is very high and as well as we can see that whenever the frequency is increasing the dielectric constant is lower. And in the graph we can also see that whenever we get dielectric constant as would be temperature variation temperature the dielectric constant always increases temperature at lower frequency variation is very much, but in the high frequency, whenever we increase the temperature, the variation is not very much. So, in the conclude, that means the active whenever we increase the temperature, the dielectric constant always increases, and whenever the frequency is increasing, the dielectric constant always decreases. So, conclusion that we have synthesized the magnesium group LCQ. We have that using the novel electrosynthetic method, where we use that the solid TiO2 as it is a very economical method to all wet chemistry method and the other solid state method because it requires very less time and also it saves energy. And one more thing, whenever the knowledge is testing or using this type of a method, the multi-step method, multi-step task to synthesize is not required. Also, we consider the XID also followed by the single crystal. So whenever we use the XID to synthesize, we can see that the calcite the pre-calcination temperature is not required. We can directly synthesize the sample, so there is a law. We can skip the various type of multi-step method. So here, so we can use the we have got some patent on this one. So on this patent also reported in the Human Korea intellectual property. So we have used this method and patented on in 2020. Also, we have lots of we have also synthesized liquid cobalt oxide as a cathode material, and this also we presented in the intellectual property of Korea. And we have also synthesized the cathode material for the lithium ion battery. So here we have synthesized the lithium ion battery. We can in the today time the lithium ion battery we are using that the lithium cobalt oxide is using in the as a battery material. So we can replace this because whatever the problem is the lithium cobalt oxide, the base problem is the lithium cobalt oxide is the cobalt is a toxic. Also, whenever we are using the mode of charging the phone, it may be heat up or it is not safe.
So we have discovered a new type of material, lithium iron borate metal. For lithium iron borate metal, it has a higher specific capacity and long cycle life. Along with it is a very safe material. So for that purpose, we have made the lithium iron borate, and we have got patented for that thing. And we have also produced make a distorted prototype for high voltage direct capacitor as a magnesium load. So this paper is the professor who was indigenous scientist in the NASA Master Research Flight Center, and we are working on the to make a prototype of this material, and we make the prototype and it's very professionalized. So there's a lot of MLC material chemistry we have discovered during these researches. So we have also worked on the hydrogen fuel cell, and they make a ceramic material which are very cheap in cell, because nowadays we are using only hydrogen from the collagen. So we want to use very economical material like lithium copper titrate. So whenever we use that material, it has so the higher efficiency than the platinum and other electrolytes in this type of material. So that is more than only so this is my primary university, that university, and I have also worked as a research professor today, Ulsan University of Ulsan in Korea University Research Institution. So we have done a lot of work. So thank you for your kind introduction. And if you have any query or question, you can ask me. Thank you, Dr. Singh, for your excellent presentation. Now the floor is open for questions and comments. Dr. Singh, you had a very nice presentation which must have benefited many of the new research students who are working in the field, in experimental field. I have learned that many of the students, they are working to improve, to have better capacitors, and you too are working on that. You have found a new material which you call calcium copper titanate. You have made rigorous investigation by changing the doping material, employing different methods to do, and you have put in hours and hours to get your result. Then its characterization. I hope and wish for success that your work may result into fabrication of highly efficient supercapacitor that you are working for. I wish success in your endeavors. Now I thank you everyone for joining us in this stimulating session where we learned advanced materials in finding better capacitors. That capacitors are very useful material not only in laboratory, but every household electrical item has got capacitor, and by improving capacitor we will improve the efficiency of whatever we do, whether at home or whether in laboratory. So that is a very interesting topic Dr. Singh is working on. So I extend my special thanks to Dr. Lakshman Singh and Dr. Pratyush Kumar Mishra also, who is working on new material to have better pharmacological applications. Your presentations were truly encouraging and thought-provoking. I express my sincere gratitude to the audience who, with interest, though they did not put any question, but with interest they listened to the scintillating, encouraging, inspiring talk given by the two talented speakers. Then I thank the technical team. By their seamless effort, the session could run smoothly.
I express my sincere thanks to the organizing committee to give me an opportunity to chair this session. The session was a fantastic opportunity to learn and grow. I thank everybody for its successful completion. I thank once again, and the session is closed now. Thank you, ma'am, and thank you for chairing this session. And now I will request Deputy ma'am to felicitate ma'am next one. Thank you. Thank you, ma'am. Now this technical session, after this technical session, we will go for the faculty presentation who participated as in the presentation offline mode. So one by one I will request, please come with your pen drive. Doctor, no fun one. Pranam, Namaskar, one and all. I, Dr. Nupin Kumari, HOD Political Science, NSS Program Officer, NSS Unit 2, and RRC Nodal Officer from T.P.S. College. I'm going to present my paper, Sustainable Development as an Important Criterion for Viksit Bharat by 2047. सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार और मैं यहाँ पर एक चीज़ प्रिंसिपल सर के लिए बोलूँगी ही इज़ लाइक अ CAG means caring administrative guardian and I think I have got this opportunity because of him. सभी faculty members, श्रद्धेय, esteemed teachers, सभी को मेरा नमन है और जो students हैं they are simply युवा भारत and अभिनंदन युवा भारत. मेरा ये पेपर जो है सभी ने बहुत सारी बातें की क्योंकि हम लोग को खुद पता नहीं कि हम कौन सी धरा पे हैं, आज यहाँ है और कल कहाँ होंगे. और यूँ तो जो आपके विकसित भारत की एट द रेट ऑफ 2047 ज़्यादातर बातें जो है कागज़ों में पड़ा है. तो हम बताएं कि आज हम हैं कौन सी धरा पे. यहाँ पर बातें सेमिनार्स में होते हैं, सभी पेपर प्रेजेंट करते हैं, पर आपके पेपर्स अगर कंट्रीब्यूट ना करें सोसाइटल डेवलपमेंट को, अगर सोसाइटल अपलिफ्टमेंट को, तो वे पेपर जो है वो वैसे ही है कि पुस्तक स्थातु या विद्या परस्गतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम. तो आज हम लोग इसकी बात करते हैं कि ये उद्यमे नहीं सिद्धांति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा. हाँ, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर सोया हुआ शेर है तो उसके मुख में ऐसे ही मृग प्रवेश नहीं करेगा. इसके लिए आपको जमीनी धरातल पर कार्य करने होंगे. ये सबसे पहला तो मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मेरे स्लाइड्स प्रेजेंट होने शुरू हो गए हैं और ये है नेशनलिस्टिक फर्वो.
आप अपने राष्ट्र के लिए, है ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अगर अपने जननी और जन्मभूमि के लिए आपने कुछ नहीं किया तो आपका जीवन व्यर्थ है। और विकसित भारत के लिए बहुत जरूरी है कि आप जो है अपने अंदर अपने आप को राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रखें, देशभक्ति से आसक्त रखें, स्नेहासक्त रखें। नेक्स्ट स्लाइड। ये हर घर तिरंगा का है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रिंसिपल सर ने भी संदेश दिया था, और हर घर तिरंगा यह जो है ये सभी को भारत के जन जन में भारत के प्रति स्नेह, देश प्रेम, देशभक्ति जगाने के लिए यह उठाया हुआ मुहिम है, और यह जो है आपको विकसित भारत की तरफ ले जाएगा। अगर बात करें तो अमृत काल की, जो कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के बाद से शुरू हो जाती है और वो 100 तक, मतलब कि 2047, जो कि आपका विकसित भारत का समय है, उसके दौरान, उसके दरमियान जो है ये अमृत काल में किया हुआ कार्य है। जैसा कि आपने देखा है कि अभी चाहे वो नेप 2020 हो या फिर कोई भी कार्यक्रम हो, हम लोग एक देखते हैं कि हम लोग अपना जुड़ाव जो है वो अपने समृद्ध भारत से करते हैं। और जो इसमें लिया हुआ पंच प्रण है वो भी है आपका। फर्स्ट वन इज दैट इज टेकिंग अ रिजॉल्व टू डेवलप इंडिया, डेवलप भारत। इंडिया ना है तो ज़्यादा अच्छा है, डेवलप भारत एज अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। सेकेंड वन इज रिमूवल ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट। आपका जीता जाता एग्जाम्पल है कर्तव्य पथ, तो रिमूवल ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट। और फिर आपने देखा एनिमल निकोबस का जो भी बहुत सारे टाइम अप हो रहे हैं। ओके, now you can see that is National Space Day with the permission of Principal Sir। हम लोगों ने National Space Day बनाया था, और इसमें आपने देखा कि आर्यभट्ट से, जो ये इस बार का थीम था, आर्यभट्ट से आप देख रहे हैं कि गगनयान तक की जो भारत ने अपनी यात्रा की है वो सराहनीय ही नहीं, विश्व पटल पर भारत को अग्रणी बनाने के लिए ये एक संकेत ही नहीं, एक संबल, उदाहरण, दृष्टांत है। यहाँ पर जो मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 की बात कही है। तो ये दीज आर टू कंपोनेंट्स। मेरे एब्स्ट्रैक्ट में मैंने ये बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, बट अभी समय की प्रतिबद्धता है तो इसलिए इसको डिटेल्स में नहीं जाती हूँ मैं आपको। तो आपने देखा क्या कि ये जो डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर गुड गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर निहित है, समाहित है, समावेशित है, इसमें आप देखते हैं कि these are Western concepts. What does it mean? These are really Western concepts? No. हमारे भारत में बहुत पहले से ही था, और आप देख रहे हैं वहाँ पर महाउपनिषद के चैप्टर 6 और द्विसप्तति, मतलब कि 72वां मंत्र में आप देख रहे हैं अयम निजः परो वेति दरना लघु चित्सां उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। तो ये जो वसुधैव कुटुंबकम जो आज भी रेलेवेंट है, और रेलेवेंट बना दिया है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने, वो आप देख रहे हैं महाउपनिषद से लिया गया है। फिर आप देखते हैं कि कौटिल्य अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए तो अगर जो अर्थशास्त्र में ये जो अर्थ है वो दी अर्थ THEERTH का कंस्ट्रक्शन दी अर्थ, ओके। तो दी अर्थ है मतलब क्या, पूरी पृथ्वी को कर लेता है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले कहते हैं ये तो हमारी किताब है, पॉलिटिकल साइंस वाले कहते हैं हमारी है, इकोनॉमिक्स वाले कहते हैं हमारी है, मैनेजमेंट वाले कहते हैं हमारी है, और जो प्रवचन देने वाले लोग होते हैं ना वो कहते हैं हमारी है। क्यों? क्योंकि उसमें ये उन्होंने बिल्कुल अच्छे से लिखा था कि अगर कोई परिवार वाला है तो वो सेलिब्रेसी नहीं ले सकता है, वो ब्रह्मचर्य नहीं ले सकता है बिना अपने परिवार की जिम्मेदारियां पूरा किए हुए। उन्होंने ये भी कहा था कि जो आप देखेंगे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो बात करते हैं, और वो जो आखिरी है ना, उसका बोलते हैं अर्थस्य मूलम, है ना। एक एक का मूल बताते हैं, कारण बताते हैं, और लास्ट में जाते हैं कि सभी का मूल विज्ञान है, और उसके बाद वो कहते हैं विज्ञानस्य मूलम वृद्धों की सेवाया, मतलब कि वृद्धों की सेवा करना ये विज्ञान का मूल है, विज्ञान की जड़ है। तो हम सोच रहे हैं हम लोग भारत से हैं, कितने समृद्ध भारत से हैं, अगर हम अपने समृद्ध भारत के जो लिटरेचर्स हैं उसका ही अध्ययन करें तो हम अपने भारत को निश्चित तौर पे विकसित भारत की ओर ले जाएंगे, जो कि एक पंचतंत्र में से एक है, जो कि पहला वाला है, ठीक है।
और जो उसमें दूसरा तो मैंने डिस्कस कर ही दिया था, इस स्लाइड चेंज करने के दौरान मैं भूल गई। जो थर्ड वन जो है वो है प्राइड इन भारत लेगेसी, और फोर्थ वन जो है वो है स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी। हमारे देश में विविधताओं की वजह से, लोगों की मतलब कुंठित मानसिकताओं की वजह से अध्ययन में जो कुंठापन है ना, उसकी वजह से अब देख रहे हैं क्या कि कितने हम लोग बटे हुए हैं कि हम लोग जानते ही नहीं कि एकता में शक्ति क्या है। और लास्ट वन इज फुलफिलमेंट ऑफ सिटीजन्स ड्यूटी। आप अधिकार चाहते हैं, कर्तव्य ना करें। वी आर हैविंग 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, और अगर इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो जो आपका 51A में जो जी है, दैट इज अबाउट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंटल things like river, lakes, even wildlife, plus having compassion for living creatures. Next one is yes. A few days ago, कुछ समय पहले मैं गई थी यहाँ पर RRCP6 का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा था, तो लास्ट फ्राइडे को। तो वहाँ पर एक बच्चे ने बताया, क्योंकि ये सब गैदरिंग संगोष्ठी बहुत ज़रूरी है, उसने ये कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आधार ये जो है आपका हेल्थी लाइफ हो सकता है, क्योंकि ये आपका जो एड्स है इसमें बिहार की रैंकिंग मतलब इसमें सबसे ऊपर है। अगर आप पूरे देश के विभिन्न राज्यों को देखें तो इसमें इसका मतलब क्या है कि हमें अपने बिहार को समृद्ध बनाने के लिए स्वस्थ रहना होगा। मेंटल हेल्थ की भी बात इधर मैं STC मैंने किया था UGC का। मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपका फिजिकल हेल्थ जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर जो है बच्चे को अवेयरनेस नहीं होती है। एक बच्चे को उसके दोस्त ने कहा कि तुम्हारा HIV पॉजिटिव आया है, उसे सुन करके ही वो मतलब ही couldn't sustain his life, he simply collapsed, वो मर गया बस ये सोच करके कि उसको HIV पॉजिटिव उसका रिपोर्ट आया है। तो अवेयरनेस नहीं है। ये भी आपका जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर ही आपका स्वस्थ देश बना सकता है, उसका निर्माण कर सकता है। एंड इट इज बेसिकली सॉर्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। इट इज अबाउट सेल्फ डिपेंडेंट। तो आत्मनिर्भर भारत की बात है। फोकस डेवलपमेंट मतलब कि इसके ढेर सारे फोसाई हो सकते हैं, जैसे गरीबों का उत्थान, महिलाओं का एम्पावरमेंट, आपका ये सबसे पहले कि एनवायरनमेंट जो आपका इसका रीजनरेशन बहुत जरूरी है। कोविड पीरियड में आपने देखा होगा कि इट वाज रीजनरेटिंग। बेसिकली जो वेस्टर्न पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट ने वो क्या क्या डीजेनरेट कर दिया, पोल्यूशन इतना ज्यादा कर दिया कि हम लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि वी आर हैविंग अ सॉर्ट ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट विच इज सिंपली गोइंग us to lead nowhere। हमारे जो पोस्टैरिटीज टू कम है, they won't be able to see greeneries। तो हम लोगों ने उस पर एक तरीके से नकेल लगाया, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का चारों तरफ हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी। फिर आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट कॉम्प्रिहेंसिवली, सिर्फ किसी एक सेक्टर में डेवलपमेंट से बात नहीं बनेगी। अगर आपको 2047 तक भारत को डेवलप कंट्री बनानी है। ओके, अच्छा ठीक है, इट्स ओके। मेरी बात तो आप लोगों को पता ही चल गई, इसमें कुछ खास नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, अभी बहुत सारे स्लाइड्स हैं जिसमें कि मैंने एक पेड़ माँ के नाम का प्रोग्राम कराया था। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग इस संगोष्ठी की जो बातें हैं उस संगोष्ठी तक ही सीमित ना रखें, उसको अपने जैसे कि बेसिकली हम लोग बहुत सारे टीचर्स हैं, हम लोग अपने क्लासरूम से सोसाइटी तक ले जाएं, क्योंकि ये जो है सोसाइटल डेवलपमेंट होगा, और सोसाइटल डेवलपमेंट के थ्रू आपका नेशनल डेवलपमेंट होगा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट होगा। मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि वसुधैव कुटुंबकम। और मैं लास्ट में यही कहूंगी, ये भी एक महोपनिषद से लिया गया है। महोपनिषद की प्रथम अध्याय तीसरी वल्ली चतुर्दश मंत्र से लिया गया है। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान्य बोधत, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान्य बोधत, चुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत कवयो वदन्ति। तो आपने देखा कि इस श्लोक का सिर्फ 3 मतलब जो 4 शब्द हैं उसको स्वामी विवेकानंद ने पैलेटेबल बनाकर नेशनलिज्म हमारे अंदर भर दिया था। और तो आज यही
इसको हम लोग अपने विकसित भारत बनने में बाय 2047 ये हम लोग हर एक जगह अपने क्लासरूम से लेकर के अपनी सोसाइटी में, सोशल मीडिया से लेकर के नेशनल प्लेटफॉर्म फोरा पे ये संदेश दे कि अब जो है भारत को वाकई 2047 में विकसित भारत बनाना है और इसके लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक क्राइटेरियन, एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन के रूप में मानना है। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय भारतवर्षम। थैंक यू नूतन मैम, आपने बहुत ही अच्छा विकसित भारत धर्म ज्ञान कर्तव्य और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में डिटेल्स हम लोगों को जानकारी दी है, इसके लिए धन्यवाद। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल डॉक्टर अनुपम बनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, राम रतन सिंह कॉलेज मोकामा। प्लीज कम ऑन एंड प्रेजेंट योर ओरल प्रेजेंटेशन प्लीज। Hello. Okay, I am Dr. Anupam Banerjee, Assistant Professor in the Department of Physics from Ram Ratan Singh College, Mokama. So, first of all, thank you, the organizer, for giving me this opportunity to present my work in this international seminar. So, the title of my today's work is Observation of Magnetic Memory Effect in Nanocrystalline Cobalt antimonies. So, as this is an interdisciplinary program, so maybe I cannot reach to everyone, but first of all, I would like to tell what is magnetic memory. So, if you know that memory is the mechanism to remember the previous phenomena, and here in this work, the magnetic memory means remember the previous magnetic phenomena. So some samples are there which can remember magnetic memories, the previous magnetic memories or the magnetic phenomena, what have been done on the sample, or the sample has been gone through previously, so it can remember that memory, and that is magnetic field mediated. So that kind of sample shows magnetic memory effect, and we can confirm these memory effects by different protocols, different magnetic measurement protocols which are listed there: ZFC memory, FC memory, AG relaxation memory, these type of different protocols. And based on magnetic memories, there are the classes are on the samples: spin glass, super paramagnet, safe memory alloys. All of these samples, class of samples which show magnetic memory effects. Here one more thing that on the sample which I have worked is basically a nanomaterial, a nano sample. There are in oxide systems there are three kind of samples are there which we usually work. One is single crystalline, one is polycrystalline, and other is nanocrystalline. So nanocrystalline give us various opportunities to probe the several novel properties in the sample according to these defects, shapes, agglomeration, surface composition. So here in this sample cobalt antimonies, we have prepared the nanocrystalline sample through hydrothermal synthesis, which was actually explained in the last talk by Dr. Lakshman Singh. So in this sample actually crystallized in a tetragonal crystal structure. Here the X-ray diffraction pattern have been shown, which is well matched with the theoretical calculations, and there these 10 images and same images shown the
size is below 100 nanometer. So we can conclude these samples belongs to nanocrystalline groups. Here you can say that see that this crystallizes in a nanocuboid forms. Here I have presented a detailed magnetic structure, the magnetization measurement, the thermal variation of magnetization. If you see there is a three magnetic transition there at 10 Kelvin, 42 Kelvin and 72 Kelvin, and it shows a thermal hysteresis between this ZFC and FC. So this type of thermal hysteresis is actually indicative of first order magnetic transition, and here we can see that with the increasing of applied magnetic field, the transition is being shifted towards lower, and the thermal hysteresis part is also vanishing. From this hysteresis plot, we can see that there is a significant amount of hysteresis, but the moment has not saturated, so it actually belongs to a canted antiferromagnetic state, because there is no saturation, but there is a thermal hysteresis. Here I have shown that with this plot, the right one is showing the magnetocaloric effect in this sample, and it is clearly mimics the magnetic transition temperature, and the left side plot is showing the kinetic arrested state in these magnetic protocols. So here in this slide, I have shown that this nanocrystalline antimatter sample showing some exchange bias, and this amount of exchange bias is actually becoming lesser as the temperature is increased. So this exchange bias actually vanishes with the increasing of temperature, and this exchange field, if you can see that the exchange field takes a saturation with the increasing of cooling field. This exchange bias is a totally different kind of phenomena, which maybe took 10 minutes talk to explain this exchange bias phenomena. And thereafter, this magnetic memory effects, which are main thing in this sample. So there are two protocols to confirm this magnetic memory effects. There is FC magnetization and one is ZFC magnetization. If you see that when the sample gone through this in the field cooling state, whenever I cool this sample through field, and I waited at these 2 points, and when I am heating this sample, the sample actually remembers this waiting time, and it is giving a up transition there, and there is also a kick. So it shows a field pull, field stop memory. And in this ZFC protocol, it is also showing that when I waited in these two positions, the two circular position, and if you see that there is an anomaly in this magnetization difference between without stop and stop graphs. So this has a ZFC memory effects, and this has an FC memory effects also. So it is actually showing a glassy nature in this sample, which in nanomaterial section we actually call this sample as super spin glass. It is also confirmed through this iron measurement and magnetic viscosity measurement. So in conclusion, I would like to say that this sample is actually a nanocrystalline sample, which is showing magnetic memory effects with exchange bias, and these have 3 magnetic transitions with a canted antiferromagnetic ground state. And this part of the work has been published last year in the Journal of Material Chemistry C,
I sincerely acknowledge to my PDF guide, Mr. Professor Pavitra Kumar Chakraborty, and my collaborators, all my past lab mates, DSTC, in during which this work actually was done in my PDF fellowship year. These are my list of publication, and thank you all for your kind attention. Very informative session given by you, sir. Next is डॉक्टर शैलेश कुमार झा सर है क्या? मैं नाम बोलते जाऊंगा, अगर कुछ कोई हो तो बताइएगा। डॉक्टर विश्वजीत कुमार चंदेल, डॉक्टर वंदना कुमारी, डॉक्टर अलोकिता कश्यप, डॉक्टर अनुपम तो हुई, डॉक्टर शशांक शेखर झा, डॉक्टर ज्योति चंद्रा, डॉक्टर रिंकी कुमारी, डॉक्टर आनंद कुमार, डॉक्टर सिद्धेश्वर प्रसाद, कोई नहीं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा रहा सर सेशन। हम लोग टेक्निकल सेशन को अब बिल्ड कर रहे हैं यहीं पे। अब नेक्स्ट सेशन कल सुबह स्टार्ट होगा। इसके लिए मैं सारे जितने भी रिसोर्स पर्सन और हमारे जितने भी चेयरपर्सन, मैम हुए, संतोष सर हुए, प्रिंसिपल सर हुए, और भी जितने डेलीगेट्स आए हुए हैं, सारे लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ अपने तरफ से, और उनको उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। थैंक यू। हाँ